So pericardium, it is basically the covering of the heart. So it consists of 3 layers, and if I write them from outside to inside, so the first layer is fibrous pericardium, and the second layer is parietal pericardium, and the third layer is visceral pericardium. This parietal and visceral pericardium together forms the serous pericardium. So generally we say that there are only 2 layers, fibrous layer and the serous layer, but first aid has written 3 layers, so I wrote 3 here. Okay, this visceral pericardium is also known as the एपिकार्डियम. तो अगर एपिकार्डियम की बात हो रही है देन वी शुड नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द विसरल पेरिकार्डियम. सो यहीं पे अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लें, सो दिस फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द पेरिटल पेरिकार्डियम, ये 2 लेयर जो हैं, इट इज सप्लाइड बाय द पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी which is a branch of internal thoracic artery, and this visceral pericardium, it is supplied by the coronary blood supply. So there is a small mnemonic to understand ताकि आपको याद रहे कि फ्लूइड इनमें किस लेयर्स में होता है. सो यू शुड मेमोराइज फैट, police, smells, villains. So fat is for fibrous pericardium, P is for parietal pericardium, and this S is for the serous fluid, and V obviously stands for the visceral pericardium. So you should also always know that serous fluid is always present between the parietal and the visceral layer. Out of these layers, the strongest one or the thickest one is the fibrous pericardium. A fibrous pericardium, it prevents the over distension of the heart. It is continuous with the central tendon of diaphragm. So अगर यहाँ पर, क्योंकि ये रैपिड ओवरफिलिंग ऑफ द हार्ट को प्रिवेंट करती है, सो बेसिकली जो पैथोफिजियोलॉजी है कार्डियक टेम्पोनार्ड में, अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं होती, इसमें इलास्टिसिटी उस तरह नहीं है, तो जो कार्डियक टेम्पोनार्ड है इट इज़ ड्यू टू दिस फाइब्रस पेरिकार्डियम जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाती है. सो उसके बाद पेरिटल लेयर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द पेरिटल लेयर, so parietal layer, it is formed by a single layer, single sheet of epithelial cells, which is also known as a mesothelium. So आगे चलते हैं, इसकी इनर्वेशन की बात करें. So it is innervated by the phrenic nerve. So phrenic nerve आपको याद होगा कि it also supplies the diaphragm, and its root values are C3, C4 and C5. इसी की वजह से जब भी कार्डियक पेन होती है, we see the referral of pain to neck and arms. This is pretty much it. Now we'll move to the main